Very good morning, students. I hope you all are great and doing good in your studies. Today, we are going to do our last chapter, which is chapter 8, Evolution of Artificial Intelligence. And in this chapter, हम लोग पढ़ेंगे about how the artificial intelligence has evolved over time, and we will study more about that in this chapter. So, without wasting any further time, let's understand the chapter. Theme of the chapter is Evolution of Artificial Intelligence, and the topic which we will discuss is take a sneak peek into the history of artificial intelligence. Now there is an activity. Rakshit wants to know more about who can perform the following task better. Help him to choose the correct answer. Use internet to help you. आपको इंटरनेट की मदद से फाइंड करना है दैट अगर हमें सपोर्ट चाहिए इमोशनल इश्यूज पे तो हमारा ब्रेन मदद करेगा या अ मशीन और अ रोबोट तो ब्रेन मॉनिटरिंग स्टॉक कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए हमारे को एआई यानी कि हमारा रोबोट मदद कर सकता है शोइंग सिंपैथी वी नीड आवर ब्रेन एंड ड्राइवरलेस कार्स के लिए वी नीड टेक्नोलॉजी नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई रेफर करता है एक एबिलिटी को किसी भी मशीन या कंप्यूटर के सिस्टम्स के टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस such as learning, problem solving and decision making. तो एआई एक ऐसी एबिलिटी है जो मशीन्स या कंप्यूटर्स को केपेबल बनाती है कि वो ह्यूमन बींग्स की तरह जिस तरीके से वो अपने काम को करते हैं, जिस तरीके से उनकी इंटेलिजेंस रिक्वायर होती है, लर्निंग रिक्वायर्ड होती है, डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड होती है, उस तरीके से वो सारे काम हमारे कंप्यूटर्स या फिर हमारी मशीन भी कर सके. तो ओवर द ईयर्स एआई हैज अंडरगॉन न्यूमरस चेंजेस. ईयर्स बहुत सारे टाइम पहले से ही कई सालों से जो एआई है वो न्यूमरस चेंजेस से या इवोल्यूशन से गो थ्रू कर रहा है विच इज लीडिंग टू इट्स वाइड स्प्रेड यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज टुडे. तो इन दिस चैप्टर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अबाउट द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ एआई फ्रॉम इट्स अर्ली बिगनिंग्स ऑफ द current state of the technology. There was a famous inventor, Dr. Raj Reddy, who is known as the father of Indian AI. Now, history of AI. The following are some milestones in history of AI which defines the journey from AI generation to till date development. Now, सबसे पहले 1642 में क्या हुआ? First mechanical calculating machine built हुई by French mathematician called Blaise Pascal. Then 1873 में what happened? First design for a programmable machine हुआ by Charles Babbage and Ada Lovelace. तो 1943 में फाउंडेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क स्टैब्लिश हुआ बाय वॉरेन मैकक्यूलोज एंड वॉल्टर पिट्स ड्राइंग पैरेलल्स बिटवीन द ब्रेन एंड कंप्यूटिंग मशीन. 1950 में एलन ट्यूरिंग ने इंट्रोड्यूस किया टेस्ट अ ट्यूरिंग टेस्ट एज अ वे ऑफ टेस्टिंग अ मशीन इंटेलिजेंस. देन 1955 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कॉइन किया गया ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस डिवोटेड टू द टॉपिक. देन 1965 में एलिजा एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम क्रिएट किया गया. एलिजा ने हैंडल किया डायलॉग्स को ऑन एनी टॉपिक सिमिलर इन कॉन्सेप्ट टू टुडेज चैटबॉट्स. 1980s क्या हुआ? एडवर्ड पेनबॉम उन्होंने क्रिएट किया एक एक्सपर्ट सिस्टम जो एम्यूलेट हुआ डिसीजंस के लिए ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट्स. देन 1997 में कंप्यूटर प्रोग्राम डीप ब्लू बीट वर्ल्ड चेस चैंपियन कैरी कैस्परोव. 2002 में आई रोबोट लॉन्च हुए रूम्बा एन ऑटोनोमस वैक्यूम क्लीनर दैट अवॉइड्स ऑब्स्टिकल्स. देन इन 2009 गूगल ने बिल्ड किया अपना पहला ड्राइवरिंग कार टू हैंडल अर्बन कंडीशंस. Then in 2011, IBM's Watson defeat champions of US game show Jeopardy. 2011 to 2014 में personal assistants जैसे Siri, Google Now, Cortana use speech recognition to answer questions and perform किया उन्होंने simple tasks. 2014 में Plan Goodfellow comes up with a generative adversarial network which is GAN. 2016 में AlphaGo beats professional Go player Lee Sedol 4-1. Then 2018 में most universities और courses आ गए artificial intelligence. Maturation of AI 1943 to 1952. So between 1943 to 1952 there was notable progress in the expansion of artificial intelligence. Year 1943 में क्या हुआ था? First work which is now recognized as AI was done by Warren McCulloch and Walter
Pitts in 1943 उन्होंने प्रपोज किया अ मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन। 1950 में एलन ट्यूरिंग थे who was an English mathematician and pioneered machine learning. 1950 एलन ट्यूरिंग इंट्रोड्यूस ट्यूरिंग टेस्ट, उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस किया था जिससे मेजर हुई कंप्यूटर की इंटेलिजेंस। ऑन इन हिज पेपर कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, जो टेस्ट था उसने चेक करी मशीन की एबिलिटी टू एग्जिबिट इंटेलिजेंस बिहेवियर इक्विवेलेंट टू ह्यूमन इंटेलिजेंस। One of the greatest achievements of Alan Turing is the creation of Bombay, which is a machine that could decode and code messages. Bombay was code breaking machine. ये code breaking machine थी that was developed to decode encrypted codes. जो encrypted codes को decode करने के लिए बनाई गई थी from German Enigma machine during World War II. बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि 1952 टू 1956 इस फेज में क्या हुआ, एआई सरफेस्ड एज अ यूनिक डोमेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इस पीरियड में पियोनर्स एंड फॉरवर्ड थिंकर्स commenced the groundwork for what would ultimately transform into revolutionary technological domain। यानी कि ईयर 1952 में आर्थर सैम्यूल एक पियोनर, उन्होंने क्रिएशन किया ऑफ सैम्यूल चेकर्स प्लेइंग प्रोग्राम का, जिसने मार्क किया वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम फॉर प्लेइंग गेम्स। देन ईयर 1955 एंड एलन नीवेल एंड हर्बर्ट ए सिमोन, उन्होंने क्रिएट किया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम व्हिच वाज नेम्ड एज लॉजिक थ्योरिस्ट। ईयर 1956 में जॉन मैककार्थी, जिन्होंने कॉइन किया टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द डार्माउथ कॉन्फ्रेंस एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ एआई। 1958 में जॉन मैककार्थी ने ही डेवलप किया लिस्ट, व्हिच इज Lisp processing, most popular and still the favorite programming language for artificial intelligence research. He is Arthur Samuel, Alan Newell, Herbert A. Simon, and John McCarthy. Now, the golden years of early enthusiasm, which is 1956 to 1974, इस टाइम में commonly known as golden age, इसको golden age बोला जाता है AI का। And in this time frame, AI researchers और innovators ने क्या किया था, they were filled with enthusiasm and उन्होंने अचीव करे remarkable advancements in the field। तो ईयर 1958 में फ्रैंक रोजेनब्लैट, उन्होंने डेवलप किया एक perceptron, an early artificial neural network ANN that could learn from data and became the foundation for more modern neural networks। 1959 में अर्थर सैम्यूल ने कॉइन किया था मशीन लर्निंग टर्म को एंड इन अ सेमिनल पेपर एक्सप्लेनिंग दैट जो कंप्यूटर है दैट कुड बी प्रोग्राम्ड और सरपास देयर क्रिएटर्स इन परफॉर्मेंस। 1964 में डैनियल बॉब्रो, उन्होंने डेवलप किया था स्टूडेंट, एक अर्ली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोग्राम which was designed to solve algebra word problems while he was a doctoral candidate at MIT। Now year 1966 यहाँ पे जो रिसर्चर्स थे they were emphasized developing algorithms जो सॉल्व कर सकते थे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को। जोसेफ विजबॉर्न, उन्होंने क्रिएट किया एलिजा, पहला चैटबॉट इन 1966 capable of engaging in conversations, जो कॉन्वर्जेशन में एंगेज हो सकता था with humans and making them believe that software had human like emotions। Now स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने डेवलप किया था शेकी, the world's first mobile intelligent robot, पहला मोबाइल इंटेलिजेंट रोबोट and that combined AI, computer vision, navigation and NLP। It is the grandfather of self-driving cars। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसने शेकी डेवलप किया था वो क्या है, ग्रैंडफादर है ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड ड्रोन्स एंड इट इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक पर्सन। जोसेफ विजबॉम कौन थे, पहले इलेक्ट्रॉनिक पर्सन। नाउ ईयर 1968 यहाँ पे टेरी विनोग्रेड क्रिएट किया था उन्होंने Stridloo, the first multimodal AI that could manipulate and reason out a world of blocks according to the instructions from a user। Then 1972 में पहला intelligence humanoid robot was built which was named Warbot 1
एंड इस ये रिजेंबल था बिल्कुल एज अ पर्सन एज मच एज पॉसिबल। इसके जो फीचर्स थे वो इंक्लूड करते हैं मूवेबल लिम्स, एबिलिटी टू सी, एबिलिटी टू कन्वर्स। There is a question, who is known as the grandfather of self-driving cars and drones? अभी हमने ऊपर पढ़ा जोसेफ वेसबॉम। नाउ द फर्स्ट एआई विंटर यानी कि 1974 टू 1980, ये जो कॉन्सेप्ट है एआई विंटर का ये रेफर करता है टू द पीरियड्स which were marked by a significant decline, एक decline in enthusiasm, funding and progress in the field of AI। यानी कि एआई की फील्ड में जो एक डेक्लाइन था, जो एक डाउनफॉल था, उसको एआई विंटर बोला गया। एंड द ड्यूरेशन वाज बिटवीन 1974 टू 1980 and was the first AI winter duration। So a boom of AI 1980 to 1987, most of 1980s showed a period of rapid growth and interest in AI। इस टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रोथ और इंटरेस्ट बढ़ गया था एआई के अंदर, नाउ लेबल्ड एज एआई बूम। And this came both breakthroughs and in research and additional government funding to support the researchers। Deep learning techniques and use of expert systems यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, both of which allowed computers to learn from their mistakes and make independent decisions। 1980 में पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ, तो 1980 में फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो हुआ एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1980 में। व्हाटबॉट 2 यानी कि दैट वाज बिल्ड एट वेसिडा यूनिवर्सिटी। द इंसेप्शन ऑफ वैटबॉट अलाउड अ ह्यूमनॉइड to communicate with people as well as read musical notes and play music on an electronic organ। 1984 में इलेक्ट्रिक ड्रीम्स रिलीज हुआ, एक फिल्म अबाउट लव ट्रायंगल बिटवीन अ मैन, वुमेन एंड अ पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पे जो यंग मैन है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर दैट डेवलप्स थॉट्स एंड इमोशंस and gains to turn its affection towards the men attractive female neighbor। 1986 में मर्सिडीज बेंज बिल्ट हुई एंड रिलीज हुई एक ड्राइवरलेस वैन equipped with cameras and sensors। ये able थी to drive up to 55 amperes on a road with no other obstacle or human driver। Second AI winter was from 1987 to 1993। इस ड्यूरेशन में क्या हुआ था, ये सेकेंड एआई विंटर ड्यूरेशन थी जहाँ पे अगेन जो इन्वेस्टर्स थे या गवर्नमेंट थे उन्होंने फंडिंग करना स्टॉप कर दिया था फॉर एआई रिसर्च एंड ड्यू टू हाई कॉस्ट बट नॉट एफिशिएंट रिजल्ट्स। नाउ emergence of intelligent agents 1993 to 2011, यहाँ पे significant leap forward in artificial intelligence, particularly in the development of intelligent computer program। 1995 में कंप्यूटर साइंटिस्ट थे रिचर्ड वॉलेस जिन्होंने डेवलप किया चैटबॉट एलिस, आर्टिफिशियल लिंग्विस्टिक इंटरनेट कंप्यूटर एंटिटी इंस्पायर्ड बाय विजबॉम्स एलिजा। In 1997 में IBM's Deep Blue achieved a historic milestone by defeating world chess champion Garry Kasparov। 2000 में प्रोफेसर सिंथिया ब्रीजल उन्होंने डेवलप किया था किस्मेट को, जो एक रोबोट है दैट कुड रिकॉग्नाइज एंड सिमुलेट इमोशंस विद इट्स फेस। नाउ होंडा ने रिलीज किया एसिमो विच इज एडवांस्ड स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी, एक आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड रोबोट इन 2000 and it is currently displayed in the Miraiken Museum in Tokyo, Japan। Then in 2002 for the first time AI enter गई home में in the form of Roomba, which was developed by iRobot, एक vacuum cleaner था ये that cleans while dodging hurdles। 2004 में NASA's Mars exploration mission was a robotic mission। ये एक robotic mission था जिसने इन्वॉल्व किया था 2 Mars rovers को, Spirit and opportunity to explore planet Mars। 2006 में AI came into the business world till the year 2006। कंपनीज जैसे फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स ये सब स्टार्ट हो गए थे यूजिंग AI। देन 2009 में गूगल ने सीक्रेटली डेवलप किया एक ड्राइवरलेस कार। बाय 2014 it passed Nevada's self-driving test and launched the first car। जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स थी वो यूज करती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर्स, कैमरास एंड AI to travel between destinations without human help।
There is a question. Name the artificial humanoid released by Honda in 2000. It is Asimo. Now, artificial general intelligence 2011 to present. So that brings the most recent development of AI up to the present day. सबसे पहले आता है year 2011. यहाँ पे IBM question answer system. That means जो वॉटसन था उसने डिफीट करा दो ग्रेटेस्ट जियो पार्टी चैंपियंस को, ब्रैड रटर एंड केन जेनिंग. एप्पल ने रिलीज किया सिरी, एक वर्चुअल असिस्टेंट ऑन एप्पल आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम. सिरी यूज करता है नेचुरल लैंग्वेज यूजर इंटरफेस टू जनरेट रिस्पॉन्सेज एंड टेक एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू द वॉइस रिक्वेस्ट. यानी कि जो भी आप उसको वॉइस कमांड देते हो वो उसको एनालाइज करता है और आपको रिस्पॉन्ड करता है. 2012 गूगल ने लॉन्च किया एक एंड्रॉइड ऐप फीचर गूगल नाउ which was able to provide information to the user as prediction. 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया कॉर्टेना, द वर्जन ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट जो एक सिरी की तरह ही है, सिमिलर बट इन आईओएस. इन 2014 Amazon ने क्रिएट किया एलेक्सा, एक होम असिस्टेंट जो एक स्मार्ट स्पीकर है, फंक्शन करता है एज अ पर्सनल असिस्टेंट. 2016 में गूगल डीप माइंड अल्फागो, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो प्ले करता है एक ब्रॉड गेम गो, डिफीटेड वेरियस ह्यूमन चैंपियंस. Humanoid robot named Sophia was created by Hanson Robotics and she is known as the first robot citizen. इसको first robot citizen बोला जाता है. What distinguishes Sophia from previous humanoids is her likeness to an actual human being. With her ability to see, image recognition, make facial expressions and communicate through AI. तो ये सारी चीजें कर सकती है. गूगल ने रिलीज किया गूगल होम, एक स्मार्ट स्पीकर जो यूज करता है एआई को टू एक्ट एज अ पर्सनल असिस्टेंट ताकि वो यूजर्स की मदद कर सके टू रिमेंबर टास्क, क्रिएट अपॉइंटमेंट्स, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन बाय वॉइस एटसेट्रा. 2018 में the project debater from IBM debated on complex topics with two master debaters and also performed extremely well. Google has demonstrated an AI program, Dupex, which was the virtual assistant that had taken hairdresser appointment on call and the lady on the other side didn't notice that she was talking with a machine. Now, year 2022 in November, OpenAI launched किया ChatGPT ने ऑफर किया एक chat oriented interface it to its GPT 3.5 LLM. Now जो AI है वो डेवलप हो चुकी है to a remarkable level. Nowadays companies जैसे Google, Facebook, IBM and Amazon ये सब वर्क करते हैं with AI and creating amazing devices. Now the future of AI intelligence is inspiring and will come with high intelligence. It is an activity that rearranges the letters to get correct words. For example, first one को आप अगर correct करोगे तो it can form Cortana. Next one can be Sophia. Like this, you will fill the rest of the other. Now, what does the future hold? हमारा future क्या hold करता है in terms of AI? So, there has been a dramatic development. Artificial intelligence की field में एक बहुत अच्छा development हुआ है over the previous few decades, including robots, self-driving cars and more. जो current AI का advancement है, they are only the beginning of a longer term trend. Now, जो artificial intelligence है is so advanced that it can beat the capture challenge. Artificial but एंड आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स जो हैं वो उनके पास इतनी एबिलिटी होती है दैट फार बियॉन्ड दोज ऑफ ह्यूमंस विल एग्जिस्ट इन अ हाइपोथेटिकल फ्यूचर. वेल, वी कैन नेवर एंटायरली प्रिडिक्ट द फ्यूचर. हम फ्यूचर कंप्लीटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. हाउएवर, मैनी लीडिंग एक्सपर्ट्स टॉक अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर्स ऑफ एआई. जो एक्सपर्ट्स हैं वो एआई के पॉसिबल फ्यूचर्स के बारे में कंसल्ट करते हैं. दे टॉक अबाउट दैट so we can make educated guesses. इसलिए हम कुछ guesses कर सकते हैं. We can expect to see future adoption of AI by businesses of all size, changes in workforces as more automation eliminate and create jobs in equal measure, more robotics, autonomous vehicles, and so much more.
There is a computer etiquette that take a safe, secure, human and environment friendly approach to AI. Let's revise the chapter. Robot Citizen is a humanoid robot named Sophia. इसको create किया था Hanson Robotics ने and she is known as the first robot citizen. LISP यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च. Shaky was the first general purpose mobile robot and also known as first electronic person. AI winter is the time period where computer scientists deal with severe shortage of funding from government for AI research. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct answer. Alan Turing introduced the Turing test. So, a checkers playing computer program was developed by Arthur Samuel. Dash humanoid robot is displayed in the Miraken Museum in Tokyo. This was created in the year 58 and the first chatbot developed in 1966 was Eliza. Now, true false, an artificial robot called Asimo was released by Honda. True. Deep Blue chess playing computer was developed by Microsoft. False. Roomba is a robot vacuum cleaner released by iRobot. True. Robot called Sophia is known as the first chatbot. False. And Apple released voice assistant Siri in 2012. Let's do the fill in the blanks. First is Dash is the world's first mobile intelligent robot. Shaky. It is a machine that could decode and encode messages. Bombay. A robot called Dash recognizes and simulates emotion with its face. Net. Dash is a computer program that plays a board game Go AlphaGo. And virtual assistant named Dash was released by Microsoft Cortana. So students, this was a complete chapter about artificial intelligence. Whatever we have studied, I hope that is clear to you. Do revise the chapter at your own again. Also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye.